ओके, मेरी आवाज आ रही है? करूं मैं शुरू? यस सर। ओके, तो हम बेसिकली ये प्रूव करना चाहते हैं कि फॉर एनी ऑर्थोनॉर्मल सेट EI which would be okay, so for any orthonormal set in H we want to show that x minus summation I runs from 1 to n. If I subtract this vector from x, जो बचा कुचा होगा, यानी गलत लिखा क्योंकि आर्बिट्ररी सेट है, इट इज सम को हम कोई नाम नहीं दे सकते, is orthogonal to EJ for all J, and of course this is true for all x belonging to H. तो फिर मैंने कहा, जैसा कि हमने प्रूव किया था, ये वाला EI इसका कलेक्शन such that x EI is non-zero is either empty or countable. तो इसको मैंने नाम दिया था स्टार, जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं. So is empty तो और countable, तो उसकी मदद से हमने देखा कि there is nothing to prove when that S is empty. S अगर empty है, we define summation x EI to be zero vector and there is nothing to prove. Now in case S is finite, in case S is finite, we can write S equal to E1, E2, En for some n, then and define summation सर x EI. कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं सर. क्या कर रहे हैं? मैंने कर दिया वेट उनको, कर रहे हैं सर. एडमिट किया मैं, अभी किया, तो 3 थे. XEI को हम डिनोट करेंगे टू बी summation I runs from 1 to n XEI and show that, लेकिन ये तुम दिखाओगे, एंड ये देखो हमने किया है एक्चुअली इससे पहले वाली एक्सरसाइज में फाइनाइट केस के लिए. इट्स वेरी इजी, यानी XEI या देन EJ, अगर तुम इसको इवैल्यूएट करोगे ये बनेगा XEJ minus XEJ that's equal to 0 for all J. अब तीसरा केस जो हमें बेसिकली प्रूव करना है, फाइनाइट केस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. So we may now assume that S is countably infinite. वो हमें प्रूव करना है. S is countably infinite. And let the vectors of S be listed in a definite order. हमने अपनी तरफ से उनको एक ऑर्डर में डाल दिया जो S के एलिमेंट्स हैं. S to be equal to E1, E2, so on and so forth. And put Sn equal to the nth partial sum of the given series. Yani summation I runs from 1 to n XEI EI. And it's the finite sum. And we note that for m bigger than n, norm of Sm minus Sn square would be equal to, of course, usually n elements बाहर निकाले तो बचेंगे n plus onwards, यानी n plus 1 2m XEI EI in norm का square, but that would be less than equal to by the triangle inequality, and because of the mutual orthogonality of these vectors. चलो मैं पैसे लिख देता हूँ. So
बन जाता है बेसिकली सम को हम अगर बाहर निकाले ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, और नहीं बेसिकली नॉट ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इट इज बिकॉज ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। जो मेरे कहने का मतलब है, देखो हमने पता है नॉर्म ऑफ एक्स एक का अगर मैं पकड़ लूं, कैसे करूं, चलो मैं जरा इसको डिटेल में करूं। So this is less than or equal to, by triangle inequality, summation I runs from 1 n plus 1 to n, it should be what, norm of x, it is modulus, क्योंकि वो बाहर आ जाएगा। चलो वो एक और स्टेप में मैं करूंगा क्योंकि मैं इसका स्क्वायर, but that would be equal to summation I runs from 1 to n, तो mod इसका स्केलर का बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा norm of ei, right, का स्क्वायर। Okay, so then norm of ei is 1, so it would be summation, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने गलत लिखा। ओके जरा मुझे सोचने दो, वैसे ज्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। दिस इज दिस का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से आ जाएगा। मैं भी खाऊंगा इसको बना रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड, तुम्हें खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि इसका नॉर्म 1 है तो इट विल बी दिस चिक, नहीं मैं क्या सोच रहा। ओके, सो ये बन जाएगा इसके बराबर। नाउ Bessel's inequality shows that, ये इंपॉर्टेंट है, Bessel's inequality हमें बताती है ये जो है summation shows that the series summation n runs from 1 to infinity, xen जो है it is bounded, है ना, so in fact it converges, तभी तो bounded होगी, converges, so Sn जो है अगर कन्वर्ज करती है, जो इसका nth पार्शियल सम है इसी सीरीज का, ये nth पार्शियल सम, तो Sn is a Cauchy sequence। अगर Cauchy sequence है, and since H is complete, this sequence, देखो जैसे है ना, मेरे कहने का मतलब है ये जो ये होगा, this can be made arbitrarily small because this converges, and because that means that Sn जो है फिर this can be made arbitrarily small, therefore Sn is a Cauchy sequence, and since H is a complete, this sequence converges to some S belonging to H. So we may write S equal to limit n approaches infinity, Sn जो मिलेगा मुझे summation n runs from 1 to infinity xen en. Now once I have sorted that this is indeed a vector in H, so we can define S to be summation n. We can define our original sum xei to be summation n runs from 1 to infinity xen en, यानी हम इसका ये सब्स्टिट्यूट ऑर्डर ले सकते हैं। पहले चूंकि हमें बताना चाहिए था ये कोई वेक्टर एग्जिस्ट करता है, तभी तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, वेदर इट इज ऑर्थोगोनल और नॉट, जो भी हमारा सिचुएशन है ना। So once we ensure that this does exist, it is limit of a sequence of vectors inside H, and H is complete, so I can think of it as a vector. I can subtract it from some other vector. तो पहले हमने ये सेटल कर दिया। Now
अगर वेक्टर है तो मैं इसको दूसरे वेक्टर के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, यानी आई कैन थिंक ऑफ x माइनस समेशन I can think of summation x ei to be summation x minus summation, oh sorry, मुझे लेना था इसका inner product with ej is equal to x minus summation n runs on to infinity x en comma ej, but that can be seen as x j minus summation minus inner product summation n runs from 1 to infinity x comma en ej, so that would be x ej minus limit n approaches infinity Sn ej. अब चूंकि inner product is commutative, so it is x ej minus limit n हम बाहर निकाल सकते हैं, and I have Sn ej, but Sn को मैं वैल्यू दे सकता हूँ x ej minus limit n approaches infinity, inner product summation j runs, yeah, I runs from 1 to n, I runs from 1 to n xei ej using the properties of the inner product, so that will be xej minus limit n approaches infinity summation I runs from 1 to n xei ej. अब जब मैं इस सम को रन करूंगा यहाँ सब 0 हो जाएंगे, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, बचेगा सिर्फ ej, so that will be xej minus limit n approaches infinity xej, लेकिन n के साथ तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, यानी ये फर्दर होगा सिंपली xej minus xej, तो वो होगा 0, therefore star is true. अब एक ही कंडीशन है, हमने इसको एक डेफिनेट ऑर्डर दिया है ना, लेकिन उसका अगर कोई दूसरा ऑर्डर होता तब भी क्या हमें यही मिलता, वो यहाँ जरा प्रूव करना पड़ेगा. यहाँ हम वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, बिकॉज नाउ दिस इज अ सीरीज ऑफ वेक्टर्स, दिस इज नॉट अ सीरीज ऑफ नॉन जीरो नंबर्स. हम कहेंगे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हमें थोड़ा सा और इसको प्रूव करना पड़ेगा. now all that remains to be shown, all that remains to be shown is that the definition जो हमने दी of summation xei is valid in the sense that it does not depend on the arrangement of vectors in S. Okay? So let the vectors of S, vectors in S यानी वो नॉन जीरो वाले जो inner production का X के साथ है, let the vectors of S be arranged in any other order, in any manner. मान लो कोई दूसरा, कोई भी दूसरा ऑर्डर, पहला वाला मान लो हमारा डेफिनेट था, मान लो अब कोई दूसरा ऑर्डर है उसका जो पहले, वो लेट्स कॉल देम f1 f2 f3. देखो अब तुम्हें ध्यान रखना है, पहले मैंने s को रखा था e1 e2 e3. अब ये सेम सेट है लेकिन इनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, यानी f3 हो सकता है f मिलियन हो सकता है e1, इसी तरह से e3 हो सकता है e20, तो f20. तो ये एक दूसरे का रीअरेंजमेंट है, सेट सेम है, रीअरेंजमेंट. एंड लेट now if we put Sn prime to be the nth partial sum of this summation I runs from 1 to n xfi fi
and as above, फिर वही मेथड में इस पे अप्लाई करूंगा because it is still an orthonormal set. ऑर्डर से ऑर्थोनॉर्मलिटी की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So we know that then as above we can show that Sn prime converges to a limit S prime belonging to S. तो बेसिकली हम दिखाएंगे S प्राइम और जो वहां S आया था जो ना उसका लिमिट था जब हमने ये अरेंजमेंट लिया था, ये दोनों सेम होंगे, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भले ही हम रीअरेंज करें इनको. ठीक है ना. We conclude the proof by showing that S is equal to S prime. तो हमारा प्रॉब्लम हमने लिया एक ऑर्डर, फिर हम लिया कोई भी दूसरा ऑर्डर, तो देखा कि नहीं उससे लिमिट पे अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस सम का जो कि एग्जिस्ट करता है वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है. नाउ लेट एप्सिलॉन बी एनी पॉजिटिव नंबर. हमें दिया गया है एक एप्सिलॉन and let n naught be the smallest positive integer such that norm of Sn minus S is less than epsilon and norm of Sn prime minus S prime is less than epsilon for all n bigger than equal to n naught. तो ये obvious है. Why? क्योंकि it would exist because this converges to S and Sn prime converges to S prime, so there exists some n naught, say n1. तो हमने उनमें तब सबसे छोटा वाला लिया, तो अगर एक के लिए तो I can find the minimum of the two so that I can choose an n naught. Actually मैं लूंगा minimum of the three, and summation I runs from n naught plus 1 to infinity mod of x fi the square is less than epsilon square. तो हमने लिया ये छोटा सा, मतलब this because this series converges by Bessel's inequality, तो its tail, and after a certain stage इसके जो remaining terms है after n naught, they would become arbitrarily small. तो कोई n naught ऐसा exist करेगा जो इसको भी true करेगा, इसको भी true करेगा, इसको भी true करेगा. हमने एक n naught ऐसा choose किया. Now अब हम ये थोड़ा ये next वाला step पे ध्यान देना. ये तो it's from the definition of the convergence of sequence and series. अगर sequence converge करेगी, you can find. अगर series converge करेगी, तो then this must be true. Now for some positive integer, अब अगर मैं एक और positive integer लेता हूँ m naught bigger than n naught, all the terms of Sn naught occur among the terms of S prime m naught. देखो Sn naught क्या है? Sn naught is basically summation I runs from 1 to n x ei n naught, sorry, ei, right? S prime m naught क्या है? That is summation I runs from 1 to m naught x fi. ठीक है. अब देखो ei's ये सेट है e1 e2 s को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f1 f2, यानी जो ei's fi's हैं ये एक दूसरे का रीअरेंजमेंट है. अब मैंने कहा चलो मैंने n naught तो मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे n naught एक सम है. अब अगर मैं m naught को बहुत बड़ा लूं तो आखिरकार मान लो ये सारी टर्म्स जो इसकी है वो इसके सम में कवर हो जाएंगी, क्योंकि ये इसका रीअरेंजमेंट में मैं एक और लूंगा, एक और लूंगा, एक और लूंगा, जब तक सारे ei's कवर ना हो जाए. मान लो यहाँ en naught तक ये एलिमेंट्स थे, मान लो वो पहले fn naught में नहीं है,
वो आगे होंगे कहीं पे, तो मैं अब वहां बढ़ते बढ़ते, चूंकि है तो फाइनाइट, आखिरकार कोई आएगा ऐसा एम नॉट विच वुड बी बिगर देन एम नॉट, सच दैट दिस एम नॉट की, एस प्राइम एम नॉट की जो ये सारी टर्म्स हैं उसमें कंटेन्ड होंगी पहली वाली टर्म्स, आई होप तो ऐसा होगा, राइट। सो दैट मीन्स वो कैंसिल हो जाएगी। उसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है, जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी ई आई वाली टर्म्स कोई बचेगी ही नहीं, क्योंकि वो माइनस हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ये सारी टर्म्स हैं, उसमें सिर्फ एफ नॉट वाली टर्म्स आएगी, एफ जे वाली टर्म्स। तो अगर ऐसा है, सो एस प्राइम एम नॉट माइनस एस एन नॉट जो होगा इज अ फाइनाइट सम, ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों फाइनाइट है तो डिफरेंस भी फाइनाइट ही होगा, फाइनाइट सम of the terms on only of the FIs, क्योंकि हमने EIs सारे कवर कर लिए, is a finite sum of the terms of the type X FI FI, वो for of course I जो होगा वो M नॉट से ज्यादा ही होगा, यानी M नॉट प्लस 1 जो भी है, नहीं सॉरी N नॉट, N नॉट प्लस 1, N नॉट प्लस 2, इस तरह से टर्म्स होगी जिनके वैल्यूज यहाँ होंगे, एन नॉट के बाद के होंगे, क्योंकि एन नॉट अगर मान लो पहले ही कैंसिल होती तो एन नॉट प्लस 1 से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आगे जाएंगे तो एन नॉट 2 एन नॉट, मतलब वहां से शुरू हो जाएगी वो टर्म्स, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी इसकी मैच करती है पहले वाली टर्म्स। This yields the norm of Sm prime m naught minus Sn naught square is less than equal to summation I runs from n, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है ये n नॉट टर्म्स, यानी इससे तो लेस ही होंगे, n नॉट प्लस 1 से अगर मैं शुरू करूं तो इन्फिनिटी इसमें सारे कवर हो जाएंगे, x f I का स्क्वायर, but we know that if n is bigger than n naught then this is less than epsilon square, और n naught plus 1 से शुरू हम कर रहे हैं तो less than epsilon square होगा by our choice of n naught। ओके, तो हमारा काम हो गया। तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर है, एंड अगर मैं लूं नॉर्म ऑफ s माइनस नॉर्म ऑफ s, दिस वुड बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ s माइनस s, मैंने क्या लिखा, s प्राइम m नॉट प्लस s प्राइम m नॉट, s प्राइम m नॉट, फिर मैं लूंगा प्लस एस एन नॉट या माइनस एस एन नॉट, चाहिए माइनस एस एन नॉट, और क्या बचा माइनस एस, आई थिंक ये मुझे, मैंने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, प्लस जस्ट अ मिनट, प्लस एस एन नॉट minus s, right? Using triangle inequality, this would be less than equal to s prime minus sm naught, right? Plus s prime m naught plus norm of sm naught plus norm of sm naught minus s. And I think that would be strictly less than epsilon plus epsilon plus epsilon. That would be equal to 3 epsilon. Now, since epsilon is any positive number, it's arbitrary, right? Now, since epsilon, and I've got, that is norm of s minus s prime is less than 3 epsilon for any epsilon positive. तो अगर ऐसा है, तुम्हारे पास एक नॉन नेगेटिव नंबर है जो किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटा है, इट इंप्लाइज दैट, so that means s is equal to s prime and we are done. So ये था अपना बेसेल्स इनइक्वालिटी और उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद कल हम करेंगे कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो लेट्स लीव इट देयर, तो इसको बंद करते हैं। सर। हाँ बोलो। सर कल हमारा रिजल्ट आया था सर। सर उसमें एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ 14 स्टूडेंट पास हुए हैं सर। ये स्टूडेंट्स बोला कि हमने अच्छे पेपर किया है तो हमारी रीचेकिंग होनी चाहिए सर। ओनली
14 स्टूडेंट्स है पास, तो जाओ ना 20 स्टूडेंट फेल हुए हैं मैं कह एब्स्ट्रैक्ट में। रहा हूँ एग्जामिनेशन में वो ऑप्शन है ना आपको